Good evening, everyone. Dear friends. So today we are going to start a new zone in the year. आज कान में एक नया जोन स्टार्ट करने वाले हैं हम और उसका नाम है Scaphoid Fossa. So let's see here. So today we will learn about the Skepheid Fossa, or in the shortcut we can tell it SF. SF. So if we see this image, so in this image we can see here, this is the location of Skepheid Fossa. We can see here. So this is the outermost covering. The outermost covering is called helix, and just below the helix we can see Skepheid Fossa. So this is the Skepheid Fossa, right? तो सबसे बाहर की कवरिंग को हम हेलिक्स कहते हैं और इसके जो अंदर है इसे हम Skepheid Fossa कहते हैं। इस इमेज में देखिए, if you see in other image, let's try to see in other image. So look at here, this is the helix and this is called Skepheid Fossa. ये गटर की तरह, एक नाली की तरह है, इसीलिए इसे स्कैफॉइड गटर भी कहते हैं, स्कैफॉइड गटर. The other name of this Skaphoid gutter or the Skepheid Fossa. So these are the name. In the short, we are telling it SF. So if you look at in this image, अगर आप इस image को देखते हैं, so we have divided this SF in multiple parts like SF1, SF2, SF3, SF4, Sf5 and Sf6. So we will discuss today about this subdivision of the Skepheid Fossa. आज हम इन्हीं subdivisions की बात करेंगे. ये Sf1 है, this is the Sf2, Sf3, Sf4, Sf5 and Sf6. So we have divided the Skepheid Fossa in 6 subdivisions. Now if you see the other image, then we can see the body is located head down, feet up position. अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो आप देखेंगे कि सिर नीचे है और पैर ऊपर हैं. And the location of arm is in this Skepheid Fossa. ये हमारा arm Skepheid Fossa के अंदर रखा हुआ है. So arm is located in the Skepheid Fossa, right? So we will see the location of different part of the arms in the Skepheid Fossa. So let's see the other image. Now look at this. So this is the Skepheid Fossa 1, Skepheid Fossa 2, Skepheid Fossa 3, Skepheid Fossa 4, Skepheid Fossa 5 and the Skepheid Fossa 6. So if we combine all the 6 parts together with one line, अगर इन सारे पार्ट्स को हम एक लाइन बनाकर जोड़ दें और सभी पर अगर हम एक एक निडल लगा दें या सभी पर एक हम सीड लगा दें तो इस लाइन को हम कहते हैं rheumatism line. सो इस लाइन को कहते हैं rheumatism line क्योंकि ये हमारे शरीर में होने वाले rheumatic पेन को ठीक करती है. The rheumatic pain or the pain due to rheumatoid arthritis. तो अगर किसी को rheumatic पेन होता है या rheumatic arthritis के कारण पेन होता है, हम इस पूरी लाइन को ट्रीटमेंट दे देते हैं. So this is called rheumatism line, right? तो इसी को हम rheumatism line भी कहते हैं. Okay. So the other name of this line is also the chikungunya line. We are also telling this whole line. If we combine all the points, then this line is also called chikungunya line. And we know what is the chikungunya. The chikungunya is the
multiple joint pain happening due to viral infection, multiple joint pain and happening in the body in multiple joints due to viral infection. हमारे शरीर में कई बार वायरस का इन्फेक्शन होता है और चिकनगुनिया नाम का रोग हो जाता है, और इस चिकनगुनिया नाम के रोग में हमारे पूरे टॉप से लेके बॉटम तक के सारे जॉइंट्स पेन करते हैं। उस बीमारी को चिकनगुनिया कहते हैं और ये एक संक्रामक बीमारी है, यानी फैलती है तो पूरे गांव के गांव, पूरे शहर के शहर बीमार हो जाते हैं। So this is the infectious disease. When the chikungunya is spreading, so it is also becoming like epidemic attack. So from the one village to the other village, from the one city to the other city, from the one person to the other person getting this disease, that is called chikungunya or the viral infection. In this chikungunya also, the people having joint pain for few days to few weeks to few years as well. चिकनगुनिया में भी लोगों को दर्द होता है जॉइंट्स में, वो कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ महीनों तक भी हो सकता है और कुछ सालों तक भी हो सकता है। हमारे पास कई पेशेंट हैं जिनको 6 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, आज भी जॉइंट का दर्द रह गया, still they are having joint pain even after the many years. So this line is called rheumatism line, as well as this line is called चिकनगुनिया line. इसी को हम चिकनगुनिया लाइन के नाम से भी पुकारते हैं, right? So the meaning of chikungunya line, when we are doing the combination of Sf1 to Sf6 all together, that becomes chikungunya line or the rheumatism line. And the meaning of rheumatism line, when the person suffering with the rheumatic arthritis, rheumatoid arthritis, and having multiple joint pain, the pain in the finger, pain in the wrist, elbow, shoulder, pain in the hip joint, knee joint, ankle joint, and the joint between the toes, जब सब ऊपर से लेके नीचे सारे जॉइंट्स में पेन करता है, इसी को हम rheumatism, तो इसे हम rheumatism line भी कहते हैं. The other name of this line is, we are telling दर्द की खाई, or we are telling it painkiller ditch. So with the help of this, we can remove the pain happening throughout the body. हमारे संपूर्ण शरीर में होने वाले दर्द को भी हम इस लाइन से निकाल सकते हैं. So this is a very special line, or the rheumatism line, or the painkiller days, or the dard ki khai. So we can see here, this line is the combination of Skaphoid Fossa 1, Skaphoid Fossa 2, Skaphoid Fossa 3, 4, 5 and 6, and we are making the combination these all. हम जब इन सबको कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारी rheumatism line या चिकनगुनिया line बन जाती है. Okay, so in this way we have seen the Skaphoid Fossa, and this is the Skaphoid Fossa. We can divide in 6 parts, Sf1 to Sf6, and this is also called painkiller ditch or दर्द की खाई. तो हमने इस तरह से Skaphoid Fossa के बारे में समझा, इसे 6 भागों में बांट दिया और इसे हम दर्द की खाई, rheumatism line या चिकनगुनिया line के नाम से भी पुकारते हैं. Okay, let's proceed ahead. Now we are doing the subdivision of this. अब एक बार हम इसके subdivision करते हैं. आप सभी को इतना समझ में आया होगा. Give me 1 minute. So let's see here. So now we'll see the all parts one by one in this Skaphoid Fossa. So let's start from here. तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हमने कहा कि Skaphoid Fossa में हमारा संपूर्ण आर्म पाया जाता है. तो पहला, as per the first imagination concept, we are having whole arm located here in the Skaphoid Fossa. तो आर्म की शुरुआत, क्योंकि सिर तो नीचे होता है और फिर ये हमारा आर्म होता है. So this is the location of arm. The arm is located in the Skaphoid Fossa. So definitely the shoulder will be in the upper part, elbow will be in the middle part, and the wrist and finger will be in the lower part. So shoulder will be in the upper part. So let's discuss the shoulder first. तो shoulder upper part में होगा, यानी यहाँ पर इस एरिया के आसपास, और ऊपर जाएंगे तो elbow मिलेगा, और ऊपर जाएंगे तो हाथ की समाप्ति हो जाएगी. तो पहला हमारा लक्ष्य है shoulder. So look at here. So if we look at the
SF1, SF2 and SF3. These all 3 points are doing the representation of shoulder, whether the SF1 or the SF2 or the SF3. ये तीनों के तीनों बिंदु कंधे का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो कभी कभी क्या होगा कि यूरोपियन लोगों ने एक कंधा माना, चाइनीज लोगों ने दूसरा कंधा माना, डॉक्टर नॉगियर ने इसमें से और कोई कंधा माना। तो कुल मिलाकर जब हम तीनों पॉइंट्स को ट्रीट करते हैं तभी कंधे का पूरा इलाज होता है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रीट ए कंप्लीट 3 पार्ट, then only we will able to treat shoulder joint. So the point number 1 is called master shoulder. Point number 1 को कहते हैं हम, ये point number 1 को कहते हैं हम master shoulder. Point number 2 को हम कहते हैं shoulder joint और point number 3 को हम कहते हैं shoulder और Chinese shoulder. अब वो चाइनीज हो या यूरोपियन हो, काम तो शोल्डर पर ही करेगा। So these 3 points are called shoulder points. So what is the meaning of master shoulder? Master shoulder को आप समझ सकते हो, master shoulder वो स्थान होता है जहां पर हम पालकी उठाते हैं, कंधे पर हम कोई वजन उठाते हैं, पालकी उठाते हैं, कहते हैं कि भाई मेरे कंधों पर बहुत वजन है, तो वो यहीं पर होता है। So the point number 1 where we are lifting the weight on the shoulder joint, shoulder area. So in this part, that is the master shoulder. The point number 2 will be the shoulder joint, and point number 3, this whole remaining area which is also having deltoid muscle and other part. So ultimately we have to treat all the 3 part. तो जब भी आप कंधे का इलाज करना चाहते हो तो आपको स्कैफोइड फोसा 1, 2 और 3 तीनों का इलाज करना होगा। जैसे ये कंधा है, अब मुझे कोई वजन उठाना है तो मैं यहां पर उठाऊंगा, पालकी उठाना है तो यहां उठाऊंगा। ये सबसे मजबूत होता है जिसे हम कहते हैं स्कैफोइड फोसा 1. So this is the Skepheid Fossa 1. Now this joint is the Skepheid Fossa 2 or the shoulder joint, and this remaining part will be Skepheid Fossa 3. So Skepheid Fossa 1, 2 and 3. Ultimately we have to treat all the 3 parts if we want to work on the shoulder pain. अगर कंधे के दर्द पर काम करना है तो तीनों को ठीक करना होगा। So Skepheid Fossa 1, 2 and 3. Okay. So when we are putting the seats or we are putting the needle for the shoulder joint, we are treating all 3 parts. हम तीनों पार्ट को ट्रीट करते हैं। The point number 1, point number 2 and the point number 3. They can be considered as a shoulder point. Let's see in the other image. अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आप इस इमेज को देख के समझ जाएंगे कि देखिए इस इमेज में इन्होंने यहां से तो कंधा चालू ही नहीं किया, स्कैफोइड फोसा में से तो कंधा चालू ही नहीं किया। ये चाइनीज इमेज है, इन्होंने कंधे को चालू ही स्कैफोइड फोसा 2 से किया है और 3 तक लेके गए हैं। तो चाइनीज लोग कहते हैं कि 2 और 3 हमारा शोल्डर है, 1 को छोड़ दिया। लेकिन कई दूसरे ऑथर कहते हैं कि 1 भी शोल्डर है, तो हम तीनों पॉइंट को शोल्डर के रूप में कंसीडर करते हैं। सो एज पर दिस इमेज, इफ यू सी, दे आर not considering the Skepheid Fossa 1 as a shoulder. They are starting the counting from the Skepheid Fossa 2 and the Skepheid Fossa 3 and considering as a shoulder. But as per the some other author, this is also the shoulder. So we are considering Skepheid Fossa 1, 2 and 3, all the 3 points as a shoulder. So Skepheid Fossa 1, Skepheid Fossa 2 and the Skepheid Fossa 3, all 3 part we will treat if we want to treat the shoulder pain. कंधे का दर्द ठीक करने के लिए हम तीनों पार्ट को ठीक करेंगे। चलिए हम आगे की बात करते हैं। Let's go ahead. Now look at here. तो देखिए एक सबसे नीचे का पॉइंट, एक सबसे ऊपर का पॉइंट और एक लिया बीच का पॉइंट, 3 नंबर का पॉइंट, और ये तीनों मिलाकर हो गया appendix. So we have taken the uppermost point, lowermost point, and 1 point in the center. All the point together become the point of appendix. So appendix disorder 1, appendix disorder 2,
and the appendix disorder 3. So this is the appendix disorder 1, and this is also the appendix disorder, and one point we have taken in the center, that is also working for the appendix. Okay, so what we are telling, many times I am also telling this point, this whole line, because sometimes we are little bit confused in the location, because the location of this point we can search very easily. The location of this point also we can search very easily. We might get confused at the location of Skaphoid Fossa 3. We might go little here and there. So in this case, if we put all the point in the Skaphoid Fossa, it will become appendix line. So Skaphoid Fossa is also very good for the pain of the appendix. Just you put all the point in the Skaphoid Fossa. If you want to go very precisely, then treat the Skaphoid Fossa 1, Skaphoid Fossa 3, and the Skaphoid Fossa 6. But if you want to go randomly, then treat Skaphoid Fossa 1 to 6 all points. There is no problem. Then it will become the appendix line, right? So we can treat the pain of appendix. We know the pain of appendix is very critical, and the person is shouting a lot when the person suffering with the pain of appendix. हम जानते हैं कि appendix का पेन बड़ा ही खतरनाक होता है. जब ये होता है तो व्यक्ति चिल्लाता है, और appendix का पेन बड़ा ही खतरनाक होता है. तो अगर किसी को appendix का दर्द है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. ऑप्शन नंबर 1 है कि आप इस पूरी लाइन को ट्रीट कर दीजिए. ये पूरी लाइन को ट्रीट कर दीजिए. पूरी लाइन का ट्रीट करने का मतलब है कि आप SF1 से लेकर SF6 तक के सारे पॉइंट लगा डालिए और इस लाइन को नाम दे दीजिए कि अपेंडिक्स लाइन. तो चलिए, आपने पूरी लाइन को ही ट्रीट कर दिया, जो रियल पॉइंट है वो भी कवर हो ही जाएंगे और अपेंडिक्स का दर्द चला जाएगा. लेकिन अगर आप बहुत ही प्रिसाइजली जाना चाहते हैं तो आपको अपेंडिक्स 1 लेना होगा, अपेंडिक्स 6 लेना होगा और एक पॉइंट बीच में लेना होगा जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स 3. सो दीज 3 पॉइंट टुगेदर आर कॉल्ड अपेंडिक्स disorder point. So appendix disorder point, we can see this is the appendix disorder point, this is the appendix disorder point, and the third number point is appendix disorder point. So these 3 points are called appendix disorder point. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's see now. Now we are going to see 2 points, the very good point for insomnia or the problem of the sleep. जब किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती, जब भी किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती तो हम इन 2 पॉइंट्स का प्रयोग करते हैं. तो देखिए, ये 2 पॉइंट का हम प्रयोग करते हैं. एक पॉइंट होता है हमारा सेकंड नंबर का और दूसरा पॉइंट भी होता है ऊपर से सेकंड नंबर का. इसके भी कंसेप्ट्स हैं, हर चीज के कंसेप्ट्स होते हैं. एक पॉइंट में हमने संपूर्ण शरीर को हमने स्कैफोल्ड फोसा में इमेजिन किया है. तो सिर यहाँ आ गया और छाती यहाँ पर आ गई, तो हार्ट आ गया. और दूसरी इमेजिनेशन में, रिवर्स इमेजिनेशन में, हमने सिर को यहाँ इमेजिन किया है और छाती को यहाँ इमेजिन किया, तो हार्ट यहाँ आ गया. तो जब हम ऊपर से दूसरे नंबर के पॉइंट को या नीचे से दूसरे नंबर के पॉइंट को ट्रीट करते हैं तो हार्ट रिलैक्स हो जाता है और लोगों को गहरी नींद आ जाती है. So we are having 2 different types of the imagination. In the one imagination, we are doing the imagination of the body head up. So this second point becomes the chest or the point of heart. In the reverse imagination, we are imaging the head here, then this point becomes the chest. So in this way, we are relaxing the chest and we can bring the sleep very nicely. इस आधार पर हम ऊपर से दूसरा और नीचे से दूसरा जब हम पॉइंट लगाते हैं तो लोगों को नींद अच्छी आ जाती है. So remember these 2 points. These points are called the point of insomnia. इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं insomnia 1. So this is the point insomnia 1 and this is the point insomnia 2. So both the point together are becoming the point of insomnia. दोनों पॉइंट मिलकर इंसोम्निया के पॉइंट बन जाते हैं. तो देखो, एक बार मैं आपको फिर से क्विकली बताता हूं. जब शोल्डर की बात आती है तो तीनों पॉइंट ले लो. फॉर द शोल्डर वी आर टेकिंग ऑल द 3 पॉइंट्स.
जब अपेंडिक्स की बात आती है तो एक ऊपर का, एक नीचे का और एक बीच का, या फिर सारे 6 के 6 ले लो. If the question of appendix, then 1 point we can take of upper point, 1 point, the lower point, 1 in the middle, or even you can take all the points, all the 6 points for the appendix disorder. And when there is a question of insomnia, then second point from the upper side and the second point from the lower side. So Sf2 and Sf5 become the very good point for insomnia. तो ये हमारे इंसोम्निया के पॉइंट बन जाते हैं. इससे लोगों की नींद की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं. हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं. हम जब इंसोम्निया का पॉइंट लगाते हैं, हालांकि हम सिर्फ एक पॉइंट लगा देते हैं, तब भी बड़े अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं. हमने देखा है कि लोग कंधों का इलाज करते हैं. कंधे का इलाज करने के कारण नींद का हो ही जाता है, तो लोगों को बड़ी प्यारी नींद आती है. So the people are getting very good sleep when even we are treating the shoulder point. Okay, so this is the very good point and we can improve the sleep. तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से शो कर रहा हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा. I am showing once again, then I will ask you. Okay, quickly. Skaphoid Fossa, we can divide in 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the rheumatism line. ये rheumatism line है. इसी का नाम चिकनगुनिया लाइन है और इसी का नाम है, हमने अभी अपेंडिक्स लाइन भी इसका नाम दे दिया, अपेंडिक्स लाइन. और इसी का नाम है पेन किलर खाई, दर्द की खाई, दर्द की खाई, और द पेन किलर डिच. ओके, सो नाउ कंधे के दर्द को हम नीचे के 3 पॉइंट से ठीक करेंगे, जिसे हम बोलते हैं Sf1, Sf2, Sf3. The Sf1 is the master shoulder, Sf2 is the shoulder joint, Sf3 is the shoulder. अपेंडिक्स के पेन को ऊपर के पॉइंट से, नीचे के पॉइंट से और एक बीच के पॉइंट यानी 3 नंबर से ठीक करेंगे. मींस Sf1, Sf6 एंड Sf3. नींद को ऊपर से दूसरा और नीचे से दूसरा यानी Sf2 और Sf5 से ठीक करेंगे. तो चलिए पहले आपको इतना बताना है, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगा. So now I am asking the question, you have to reply in the chat box. So tell me, which is the best point for insomnia in the Skaphoid Fossa? नींद लाने के लिए Skaphoid Fossa में कौन सा पॉइंट शानदार है? Tell me. नींद लाने के लिए, for bringing us sleep, which point is good in the Skaphoid Fossa? Question number 2. So we have to stimulate the Skaphoid Fossa 2 or 5 with the needle or with the seeds or with the acupressure. हम कैसे स्टिमुलेट करेंगे? निडल से करेंगे, सीड से करेंगे, एक्यूप्रेशर से करेंगे, मसाज करेंगे. What we can do? So the answer, we can do anything. Whatever we want, we can do. Even we can do massage, and the person will get very good effect. Okay. Question number 2. Tell me, if the person is having abdominal pain and suffering with the appendicitis, which point is good? अगर व्यक्ति को appendicitis का अटैक आया है, पेट में दर्द हो रहा है, सबसे बेहतर पॉइंट कौन से हैं? बताइए. Okay, question number next. Very good. 136 is the right answer. Question number next. कंधे के दर्द को मिटाने के लिए किन बिंदुओं का प्रयोग किया जाएगा? The person is having pain in the shoulder area. Which point we are going to use? Very good. Wonderful. Question number next. The person is suffering with the multiple joint pain because of the rheumatoid arthritis. Which point to use? एक व्यक्ति को rheumatoid arthritis के कारण सारे जॉइंट में पेन कर रहा है, या हो सकता है किसी पर्टिकुलर जॉइंट में पेन कर रहा हो. किस पॉइंट का प्रयोग करेंगे? Which point we are going to use for the patient suffering with rheumatoid arthritis? Very good. So we are going to use all points, Sf1 to Sf6. Question number next. चिकनगुनिया के पेन में जब संपूर्ण शरीर में दर्द होता है, हर एक जॉइंट में पेन होता है, तब हम किस पॉइंट का प्रयोग करेंगे?
वेरी गुड, 1 to 6, वंडरफुल। नेक्स्ट पार्ट, कि एक व्यक्ति को हाथों में दर्द है, पता नहीं किस कारण से दर्द है, वी डोंट नो द रीजन of the pain in the arm. So the person is suffering with the pain in the arm, maybe in the shoulder, maybe in the elbow, maybe in the wrist. उसे हाथों में कहीं दर्द है, पता नहीं किस कारण से है। तो क्या हम स्कैफोइड फोसा का प्रयोग कर सकते हैं? Can we use the Scaphoid Fossa or not? Yes, whatever the reason is this, whatever the problem is this, we can use Scaphoid Fossa, कुछ भी हो, चाहे चोट लगने से दर्द हो, चाहे एक्सीडेंट के कारण हो जाए, चाहे क्रॉनिक आर्थराइटिस हो जाए, पेरी आर्थराइटिस हो जाए, टेनिस एल्बो हो जाए, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाए, हाथों में होने वाला किसी भी प्रकार का पेन आप इससे ट्रीट करोगे, whatever the problem happening because of any reason, and you are going to treat this, right? So let's go ahead, अब आगे बढ़ते हैं, let's see now. So we have seen this is the master shoulder. So the meaning of master shoulder means this is the part, ये master shoulder है. So this is the master shoulder. And at this level only we are having this collarbone. So collarbone or the master shoulder, and at this level whatever is coming, that is the Sf1, Scaphoid Fossa 1. So the meaning of Scaphoid Fossa 1, whatever coming at this level. So at this level, master shoulder is coming, collarbone is coming, even the thyroid is coming. So Sf1 will be the point of thyroid, point of collarbone, point of master shoulder. इस मास्टर शोल्डर के लेवल पर जो कुछ भी आएगा वो सब Sf1 में आएगा, फिर चाहे शोल्डर हो, चाहे क्लेविकल या कॉलर बोन हो, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो, हम तीनों के लिए Sf1 का प्रयोग करेंगे, राइट? द मीनिंग ऑफ Sf2 मींस शोल्डर जॉइंट. Sf2 का मतलब है शोल्डर जॉइंट, और हमने देख लिया कि इंसोम्निया पर भी काम करेगा. सो दिस इज आल्सो गोइंग टू वर्क ऑन द इंसोम्निया, राइट? So shoulder joint is coming at the level of heart. So it is relaxing the heart. So Sf2 also working for the insomnia. Now Sf3. Sf3 is this shoulder part and this whole part. This is the Sf3. Sf1, Sf2, Sf3 till the elbow. Sf3 is till the elbow. So Sf3 will be till the elbow. So this whole part till the elbow joint. So let's see here. So let's see Sf1, Sf2 and Sf3, all the 3 points. Once again, एक बार मैं आपको तीनों पॉइंट फिर से बताता हूं, आप इस इमेज में देखिए. So look at this image. So when we talk about the Sf1, the Sf1 means master shoulder, Sf1 means collarbone, even the thyroid, because these all are coming at this level. इस लेवल पर जो कुछ भी आता है वो सब Sf1 में चला जाएगा. अब Sf2 का मतलब है, the meaning of Sf2, the shoulder joint and the insomnia, we already have seen, हमने already देख लिया है, we already seen. अब शोल्डर के नीचे गए, अब मिलेगा अपर आर्म. Now the Sf3 will be upper arm. Okay, so this is the upper arm. Now, तो हम Sf3 तक हमने गया, till the Sf3 we have completed master shoulder, shoulder joint and shoulder and upper arm. पूरा upper arm तक का भाग हमने खत्म कर दिया, इतना भाग खत्म हो गया till the Sf3, right? So the meaning of Sf3, all the part before the elbow we have finished. Elbow के ऊपर का जितना भी पार्ट था हमने Sf3 तक फिनिश कर दिया. Now we are going ahead and looking the Sf4. तो Sf4 को पहचानने के पहले आप उल्टा चलिए,
पहले SF5 को पहचानिए, फिर SF4 को पहचानिए. So first you recognize the SF5, then you can recognize the SF4. So let's see here. तो हम पहले SF5 को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? So look at me. So if you look at this ear, अगर आप मेरा कान देखेंगे, so you can see this is the Darwin tubercle. ये कान में ये Darwin tubercle है. So just below the Darwin tubercle we have SF5. Darwin tubercle के ठीक नीचे होता है हमारा SF5. So once we recognize the SF5, now go down, that is SF4. एक बार आपको SF5 मिल गया तो आप नीचे चले जाओ तो आपको SF4 भी मिल जाएगा. Remember, Darwin tubercle means SF5. Darwin tubercle means wrist. So Darwin tubercle means SF5 and the Darwin tubercle means wrist joint. So Darwin tubercle is very important joint. So Darwin tubercle, so first I would like to show you SF5. पहले मैं आपको SF5 शो करना चाहूंगा, फिर हम उल्टी गिनती गिनेंगे तो आसान होगा. So let's see here. So if you look at in this image, so this is the Darwin tubercle or DT or the helix 11. Now below that we have this SF5. And when we talk about the SF5, so SF5 is the point of wrist. Remember, this is the point of wrist. And the most wonderful thing about this SF5 is also the point of urticaria और द स्किन डिसऑर्डर. SF5 हमारा अर्टिकेरिया और स्किन डिसऑर्डर का भी पॉइंट है और ये बड़ा गजब का काम करता है स्किन की बीमारियों में. हमने कई पेशेंट को जब हमने देखा कि इनको चमड़ी का कोई रोग है, हमने SF5 के ऊपर एक सीड लगा दिया, उनको बड़ा आराम मिला. जस्ट वी हैव पुट वन सीड ऑन द लोकेशन ऑफ SF5 and this point is working very nicely for the urticaria and for the skin disorder. इसलिए हम SF5 को स्किन डिसऑर्डर का पॉइंट भी कहते हैं, अर्टिकेरिया का पॉइंट भी कहते हैं. So when someone is suffering with the itching, we can do the treatment here. We can also take out few drop of blood from the Darwin tubercle and put the seeds on the SF5. जब किसी को चमड़ी में कोई रोग होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि डार्विन ट्यूबरकल से थोड़ा सा ब्लड निकाल दें और SF5 पर हम सीड या निडल लगा दें, बड़ा अच्छा आराम मिलता है. बिकॉज SF5 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर स्किन डिसऑर्डर और द अर्टिकेरिया. स्किन डिसऑर्डर और अर्टिकेरिया के लिए बड़ा ही गजब का पॉइंट होता है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सिंपल सा कारण है दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर. सो द रीजन इज वेरी सिंपल. Because when the person is suffering with the urticaria is one type of attack of wind. जब हमारे शरीर में अर्टिकेरिया होता है, एकदम खुजली मचती है, उसे भी हम एक तरह का बोल सकते हैं कि विंड अटैक हुआ. क्योंकि अर्टिकेरिया और बाकी की खुजलियों में अंतर है. अर्टिकेरिया मतलब एकदम से होने वाली खुजली, ऐसे व्यक्ति खुजा रहा है, तो विंड तो होगी, विंड के साथ और भी टॉक्सिन हो सकते हैं. सो द डार्विन ट्यूबरकल इज द पॉइंट ऑफ लिवर यांग. The Darwin tubercle is the point of liver yang. So when we are treating the SF5, it is also working on the liver yang. It is helping the Darwin tubercle. तो जब हम SF5 पर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये लिवर यांग को कम करने में मदद करता है, तो खुजली मिट जाती है. हम SF5 का प्रयोग हमने कई स्किन के अलग अलग डिसऑर्डर में किया है और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. सो SF5 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर स्किन डिसऑर्डर इन द अर्टिकेरिया एंड द रिस्ट. और इसके नीचे आ गए तो रिस्ट के नीचे क्या होता है? रिस्ट के नीचे होता है लोअर आर्म. तो रिस्ट के नीचे वाला हमारा SF4 विल बी द फोर आर्म एंड द लोअर आर्म. तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं. लेट्स सी हियर. सो फ्रॉम SF1 टू SF3, दिस इज द होल शोल्डर टू अपर आर्म. शोल्डर टू अपर आर्म. तो 3 में तो एल्बो के पहले की बात हो गई. नाउ SF4 टू ऑनवर्ड्स वी हैव द पार्ट बिलो द एल्बो. SF4 के बाद से एल्बो के नीचे का पार्ट है. सो SF4 विल बी द एल्बो
SF5 will be the wrist, and SF6 will be the fingers, palm and fingers. तो SF4 में हमारे कला एल्बो आ जाएगी, एल्बो के साथ साथ एल्बो के नीचे का आर्म भी आ जाएगा। SF5 में हमारी कलाई आ जाएगी और SF6 में हमारा पूरा हथेली और उंगलियां आ जाएंगी। Okay, so let's see here. Look at here in this image. So let's talk about the SF4. SF4 means elbow and forearm, elbow and forearm. The meaning of elbow and forearm that we know. So this area, elbow and forearm. This area is SF4. तो एक बार मेरा हाथ देखिए, ये जो एरिया है एल्बो से लेके फोरआर्म तक ये SF4 है, दिस द SF4 and this the SF5 and this is the SF6. So 4, 5 and 6. Okay, so elbow and forearm is SF4, wrist is SF5 and palm and finger is SF6. So look at here. तो हम यही देख रहे हैं। अब हम यहां से बात करते हैं। So SF1 is the master shoulder. SF2 is the shoulder joint. SF3 is the shoulder and arm. SF4 will be elbow and arm. SF5 is wrist and SF6 will be palm plus fingers. Palm plus fingers, right? So this is the description of all the things. Okay, now, is it clear? Shall I demonstrate you if it is clear? Location is clear. If any question, put in the chat box. Can we use SF5 for psoriasis? Yes, I have used. It's a very good result. SF5 we have used for the psoriasis. It is giving very good results. Right. So look at here, SF1, SF2, joint, SF3, SF3, SF4, SF4, and this elbow to this whole 4, SF4, SF5, and 6, SF6. Yeah, we can apply the seats. Yes, हम seat को apply कर सकते हैं. Yes, you're right. We can apply the seats. Is it clear now? Any question? If any question, put in the chat box. If you don't have any question, then I will go for demonstration. So this is the Skaphoid Fossa. This is the Skaphoid Fossa. So let's start one by one. Now, first we want to treat only shoulder joint. हम केवल shoulder joint को ठीक करना चाहते हैं. So from the SF1, this is the SF1, and this is the Scaphoid Fossa.
and this is the SF6. The last is SF6. तो ये SF1 है और ये पूरा स्कैफोइड फोसा है और ये लास्ट में SF6 है. इसे कहते हैं स्कैफोइड फोसा या स्कैफोइड गटर. This is the scaphoid. This is also called rheumatism line. If we put the point 1, 2, 3, 4, 5, 6, put the 6 point, put the 7 point, put the 5 point randomly. So it is called rheumatism line. अगर आप 5-6 point randomly लगा देते हो तो rheumatism line कहलाती है. जब आप पूरे शरीर में दर्द होता है, मल्टीपल जॉइंट में पेन होता है, तो पूरे के पूरे लाइन को ट्रीट कर देते हो, तो यह चिकनगुनिया लाइन बन जाती है. तो चलिए पहले हम कंधे का इलाज करते हैं. So let's do the treatment of shoulder. So if we want to do the shoulder joint problem, SF1 master shoulder, SF2 shoulder joint, and SF3. That is also the shoulder. So we'll put the 3 point. I am putting the seed here. Seed number 1. That is SF1 master shoulder, SF2, and SF3. Done. So we have put the 3 point. Now, so when we talk about the SF1, SF1 is the point of master shoulder or the collarbone or the thyroid. इसे थायराइड का भी पॉइंट कहते हैं, मास्टर शोल्डर भी कहते हैं और कॉलरबोन का भी पॉइंट कहते हैं. यानी गले के लेवल पर कुछ भी प्रॉब्लम हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. हमने कई बार गले के इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया है. इससे हमारा गला खुल जाता है क्योंकि मास्टर शोल्डर और गले के लेवल पर होने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट if any problem happening in the shoulder, master shoulder level. SF2 is the shoulder joint and the point of insomnia. SF2 हमारा shoulder joint का point है जिसे हम insomnia का point भी कहते हैं. And SF3 also the point of shoulder. इसे भी हम shoulder का point कहते हैं. अगर हम अब simply देखें तो हम बात करेंगे कि this is the shoulder. SF1 is the shoulder, master shoulder. SF2 is the shoulder joint and SF3 is the shoulder. So SF1 to 3, all 3 point together healing the shoulder problem. चलिए अब हम बात करते हैं अपेंडिक्स की. तो जब हम अपेंडिक्स का दर्द ठीक करना चाहते हैं तो हम कैसे इलाज करेंगे? Let's see. So when we want to treat the appendicular pain, appendix pain, so SF1 and we'll put 1 point at the last, that is SF6. ये हमारा SF6 एकदम लास्ट में जहां पर हमारा स्कैफोइड फोसा खत्म होता है. और द थर्ड पॉइंट विल बी ऑन द SF3. सो SF1, SF2 and SF3. Now we have given the point SF1, SF3 and SF6. So this is the treatment for appendicular pain, the pain of the appendix disorder. जब किसी को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है तो हम इन 3 पॉइंट के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. So this is our second point. Now अब हम बात करना चाहते हैं कि किसी को नींद नहीं आ रही है. We want to treat the person suffering with the insomnia. एक व्यक्ति जिसे नींद की प्रॉब्लम है, उसका नींद की प्रॉब्लम को हम ठीक करना चाहते हैं. So what we are going to do? So from here we will go on the point number 2. From here also we will go to the point number 2. So this is the SF2 and SF5. The 2 points are very good for insomnia. ये SF2 और SF5 ये 2 बिंदु हैं जो इंसोम्निया या नींद की प्रॉब्लम का इलाज करते हैं. सो दिस इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर दिस पर्पज. गॉट इट. तो हमने नींद का इलाज कर लिया, अपेंडिक्स का भी कर लिया, शोल्डर का भी कर लिया. चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट की. हमने आपको बताया डार्विन ट्यूबरकल. सो लेट्स सी द डार्विन ट्यूबरकल हियर. So this is the Darwin tubercle. We can see the slight elevation here. ये डार्विन ट्यूबरकल है. डार्विन ट्यूबरकल इज द पॉइंट ऑफ लिवर यांग. इसके नीचे हमारा जो SF है इसे हम कहते हैं कलाई और रिस्ट. सो दिस इज द रिस्ट, SF5. दिस इज द रिस्ट, SF5. ओके, लुक एट SF5. So SF5 is the very good point for urticaria, skin disorder. Whether you want to treat the psoriasis problem, eczema problem or the acute itching, any problem of the skin,
You can use this point for all types of skin problem. So we have given the name, this point is for skin disorder as well as for urticaria. इसे हम skin disorder या urticaria का point कहते हैं. अच्छा, दूसरा ये कलाई का बिंदु है, तो रिस्ट में दर्द हो तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. Now, if we go below from this point, so this is Sf4. ये हमारा Sf4 हो गया. So Sf4 is elbow and lower arm. Sf5 is wrist. तो Sf4 हमारी एल्बो हो गई और लोअर आर्म हो गया और Sf5 हमारा रिस्ट हो गया. तो हमने एल्बो के नीचे का पूरा पार्ट यहाँ ले लिया. तो एल्बो, लोअर आर्म, रिस्ट और ये बचा हुआ ये पार्ट हो गया हमारा फिंगर्स का. So we can treat this part for the finger problem. So let's see, I am putting here the seeds. This area is the point of palm and finger, and this area is very bigger. So we can put two seeds here, one here and one here. So this is the area of palm and finger, Sf6. So listen again. This is the Darwin tubercle, Sf5 for wrist. Then palm and finger. Okay, come back here. This is the Darwin tubercle, the below the Darwin tubercle wrist. This is the elbow and lower arm. तो पहले आपने डार्विन ट्यूबरकल को ढूंढा या स्कैफोइड फोसा 5 को ढूंढा, उससे ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा पाम एंड फिंगर, और इसके नीचे आओगे तो आपको मिलेगा एल्बो और लोअर आर्म. इस माध्यम से आप तीनों पॉइंट को सर्च कर सकते हो, लगा सकते हो. तो हमने समझा, हमने ये तीनों पॉइंट की बात भी समझ ली. सो वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं. सो मास्टर शोल्डर और Sf1, Sf2 shoulder joint, Sf3 shoulder and upper arm, Sf4 elbow, lower arm, Sf5 wrist, Sf6 palm and finger. We have covered all. So from here we can see this is the whole area of the Skepheid Fossa, and this is the Darwin tubercle. So if I open this area, so look at in this image. So this is the last part, or the Skepheid Fossa 6, and this is the first part, or the Skepheid Fossa 1. So this is the 1, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 is a little bigger area. So 1, 2, and 3 we can treat the shoulder. So 1, 2, 3 is the shoulder, and 3 will be till the upper arm. तो 1 2 3 तक शोल्डर है और अपर आर्म तक है, और ये 4 नंबर Sf4 is the elbow, Sf5 will be the wrist, and Sf6 will be the palm and finger. I think it's absolutely clear. There is no confusion. Okay. So we can put the seeds here, we can put the needle here, we can do the treatment or any method as per our choice. So now if you have any question, put in the chat box, or see, whatever the problem in the upper arm, the problem of muscle, the problem of bone, the problem of fluid, the problem of swelling, the problem of injury, accident, if the problem in the upper arm, we will see this point. I'm not telling you that we have to take this point for the muscle pain, for the nerve pain, for the bone pain. Whatever problem happening in the upper arm, you have to use these point. हमारे उस एरिया में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका कारण जो भी होता है, हमें इन्हीं पॉइंट का प्रयोग करना है.
Mr. Sumul Goikji, the subcortex we cannot discuss, yeah, because this is the entirely different topic. So maybe we will discuss. We just have discussed two things. Number one, helix. Number two, Skepheid Fossa. Now slowly, and we will move to all the ear part one by one, and we will come to the anti-tragus. That time we will discuss your questions. Okay. That time we will focus on that, on the discussion of anti-tragus. Yeah, anything, numbness, pain, swelling, you can use. Any problem in the arm, you can use Sf1 to Sf6. हाथों में कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप यूज कर सकते हैं उसे। मैंने आपको जवाब दिया ना मानव टेलर जी, कि भले ही फ्लूइड का अगर अपर आर्म में कोई प्रॉब्लम है, हम इसी का प्रयोग करेंगे। इफ द प्रॉब्लम इन द अपर आर्म, वी आर गोइंग टू यूज द सेम पॉइंट। Ear to E used. I don't know what you are asking. Yeah, if the problem in the shoulder, even the shoulder luxation, we will use the same point. Auricular में हमें यही फ्रीडम होती है। Auricular में हमें क्या फ्रीडम होती है कि हमें जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। आगे चल के हम कुछ समझेंगे, जब प्रोटोकॉल मैनेजमेंट वाला पार्ट आएगा तब हम आपको बताएंगे कि कब सिंपैथेटिक का प्रयोग करना है, कब एंडोक्राइन का प्रयोग करना है, तब थोड़ा और दिमाग लगाया जाएगा। लेकिन अभी जो हमने समझा है उसके अनुसार अगर शोल्डर में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको ये प्रोटोकॉल का प्रयोग करना है, आपको उसी लोकेशन पर पॉइंट को ट्रीट करना है। आर्म पेन के साथ लेग पेन में भी so if the person is also having the pain in the leg, we will use the leg also. अभी हमने आर्म की बात करी है, फिर जब हम लेग की भी बात करेंगे तो हम लेग के पॉइंट भी लगा देंगे। We are also going to use the point of the leg if the person is suffering with the leg pain. हमारा जो एंटी हेलिक्स है उसके सुपीरियर क्रस्ट में लेग आएगा, जो हम समझेंगे। We will learn anti helix 1, 2, 3, 4, 5, 6, all the points, and in that, in the upper crust of the anti helix, we will also discuss leg. Treatment we can do on the same side of the problem, or we also can do bilateral. Suppose someone is suffering with the problem of indigestion, then we cannot tell the problem of the left side or right side, then we can treat bilateral. But the person is having pain in the right shoulder, then we can treat only right here. कंधे के दर्द के लिए भी हम उसी तरफ यूज करेंगे। बहुत जल्दी फायदा मिलता है कंधे के दर्द में। बस बात वही है कि अगर मान लो डायबिटीज के कारण होता है तो हम समझेंगे कि डायबिटीज को भी ट्रीट करना होगा। If the person having shoulder pain, you will put the point, person definitely will get the benefit. But if you want to treat it from the root, then we also have to treat the point of diabetes. Yeah, so for the appendicitis, during the heavy pain, it is going to work. Yeah, you are right. That's why we are telling it appendicular pain 1, appendicular disorder 1, appendix disorder 2, and appendix disorder 3. It is going to work. Yeah, for the urticaria, we also got the point today, even for the shoulder. For the appendix, also we can put the point bilateral. क्योंकि कान में हमारा लिवर, दोनों कानों में, लिवर के भी पॉइंट दोनों कानों में होते हैं। ये बात सच है कि जब हम और ज्यादा डीपर डिफरेंशिएशन करते हैं, so we will find the point of pancreas in this year, point of spleen in another year. But
we are having the point of heart in both ear, point of liver in both ear, point of pancreas in both ear, point of spleen in both ear. Yeah, definitely we cannot do the stimulation for pregnant lady until and unless we know thoroughly. प्रेगनेंसी के समय, और कान तो वैसे भी बड़ा ही बहुत ज्यादा क्विक रिजल्ट पैदा करता है, तो प्रेगनेंसी के समय आप सोच समझ के ट्रीटमेंट दीजिए. काइंडली ट्रीट द पर्सन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेरी केयरफुली. ओके, because see, you will see the effect very instantly. Someone will tell you, can you treat my shoulder pain? You will put Sf1, Sf2, Sf3, press once, and you will see 60 to 100% pain will go away. 60% to 100% pain will go away instantly just by the seeds. So auricular therapy is very fast. Someone is not suffering with the hormonal problems, and the problem of the bleeding is not happening. Sometimes we are putting the point and bleeding starts on the same day. So auricular therapy is very effective for this purpose. So during the pregnancy we have to be careful. Okay, fine. तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं. अब हम मिलेंगे परसों. Now let's go and meet the. We'll discuss. We'll discuss the point step by step. Now we are discussing helix, then scaphoid, then anti-helix, then after finishing all the part, then protocol management. Okay. बहुत लंबी यात्रा है. Okay. So now closing the session. See you on Wednesday. No, Friday. Friday को मिलते हैं. चलिए. और सैटरडे को हमारा होगा नाडा. सैटरडे को हमारा नाडा होगा 3 बजे से, तो वो भी आप सबको ज्वाइन करना है. नाडा मीन्स द ट्रीटमेंट ऑफ डी एडिक्शन यूजिंग ईयर एक्यूपंक्चर. ओके. और जो लोग बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस करेंगे उनको हो सकता है फॉरेन जाने का चांस मिलेगा, क्योंकि मेरे पास कई जगह से ईमेल आया है कि उनको कुछ ऑरिकुलर एक्यूपंक्चरिस्ट चाहिए जो डी एडिक्शन का ट्रीटमेंट करते हों. आपको चैट बॉक्स में डालना होगा. चैट बॉक्स. So like a few person want to open the de-addiction clinic in Maldives, in abroad. They need some therapist. They need some auricular therapist if they can do the treatment of de-addiction. तो आप में से जो अच्छा करेगा उसका मैं नाम रिकमेंड कर सकता हूँ. Cervical area, noise vein, move neck, helix 14, 15, cervical triangle, good enough. Yeah. Cervical triangle is very good for the, if we are moving the neck and there is a cracking sound coming from the neck, if the pain in the neck, you can use cervical triangle. You are right. Okay. Ram Gopal, you are writing something? Right. Okay, Ram Gopal ji, quickly unmute yourself and ask. Yeah. सर ये कैसा लेना है सर? अच्छा, ये हाँ, इसको कैसे ये आज मिला मुझे. कितने दिनों के बाद मिला आपको ये? 6 दिन सर. 6 दिन के बाद मिला. इसको कैसे लेना है? आपने टेस्ट किया? नहीं सर, अभी खोला नहीं. अच्छा, टेस्ट करके बताइए कैसा है. ओ सील्ड है सर. हाँ, तो सील खोलिए ना उसके. ओपन इट. अच्छा है सर. च्यवनप्राश जैसा है. Yeah, but this is not the Chyawanprash. Okay. This is, we have mixed many medicine which is very good working as an immunomodulator and the brain enhancer. एक टेबल स्पून सुबह शाम लीजिए, कभी भी ले सकते हैं, बिफोर मील, आफ्टर मील एंड विद द मील. आप रोटी में जैम की तरह लगा के भी खा सकते हैं. दूध के साथ सर? दूध के साथ भी ले सकते हैं. अच्छा सर, थैंक यू.
चलिए जी, उतना ही पूछना था। ये कितना एक्चुअली दिन इसलिए मैंने बोला कि ये जो प्रोडक्ट हमारा है ना, इससे हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसको हमने खुद बनाया है। अच्छा सर। तो सर आप कितना दिन लेना सर, कुछ इसको लीजिए बेनिफिट्स? लगातार, इसको जितना ले सकते हैं। इट विल, आप 1 महीने में देखेंगे, you will see the changes in your skin within a month, in your Okay. vision, in your digestion, in your memory. You will see the changes with this within a month. ओके। You will see the changes. ब्लड प्योरीफाई भी होता है ना? It's a very good blood purifier और आपके lungs को की हेल्थ को बहुत अच्छा बनाएगा। अच्छा सर, Yeah. थैंक यू Okay. सर। Yeah. तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। एब्रॉड में पता नहीं, मैंने पूछा नहीं है, मैं पूछूंगा कि ये लोग एब्रॉड में भेजते कि नहीं, है ना। मुझे चाइना भी भेजना है। आई हैव टू सेंड इन द चाइना एज वेल। इंडिया में इंदौर में पहुंच जाएगा और हैदराबाद में भी पहुंच जाएगा। मधुबाला जी, यस प्लीज, आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे। मधुबाला जी बोलिए। हाँ जी। हाँ जी सर। सर मैं वही पूछ रही थी, रूमेटाइड में जो आपने आर्म्स में तो जॉइंट पेन में होता है, इससे आराम मिलेगा, लेग्स में भी इसी के साथ आराम मिलेगा या डिफरेंट? अगर रियूमेटिज्म का पेन है तो दर्द चाहे हाथों का हो या पैरों का हो, सब में आराम मिलेगा। एंड सर जो मिर्गी के दौरे आते हैं उसके लिए, फिट्स के लिए? वो तो हम आगे समझेंगे, अभी तो हम एंटी ट्रगस की बात करेंगे, तब मिर्गी की बात की जाएगी। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। रत्न पारके जी, आपको मिलेंगे 20 सेकंड। 20 सेकंड में आपको अपना क्वेश्चन खत्म करना पड़ेगा, जल्दी बताइए। सर मुझे भी वो चाहिए, आपने जो प्रोडक्ट बनाया आप भी। हाँ जी, 2 डब्बे चाहिए मेरे को। ठीक है जी, आपको मैं तो आपके मेरा एड्रेस तो है उसमें। ठीक है, मैं आपसे, आप उनको बोलता हूँ, वो आपको कॉल करके दे विल टॉक जी टू। सर एक जी चीज, सर मेरा वो आपसे मेरा बात जी करके सर मेरे अवेलेबल। से बात करिए ना प्लीज। हाँ सॉरी सर बताइए ना, क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, मैं उनसे कहूंगा, वो आपको फोन करेंगे और आपसे जो जरूर जो एड्रेस ले लेंगे और आपको सेंड कर। हाँ नहीं, वैसे आप भी पीडीएफ में भेजा है पूरा, मुझे 2 डब्बे भेज दीजिए। हाँ जी, तो एएनसी को भी दे आपको नहीं सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में भेजूं कि रियल फॉर्म में भेजूं? जो फायदा करे उसमें भेजिए। ठीक है जी, ओके। या श्योर सर एएनसी को दे सकते हैं? हाँ, एएनसी को? यस यस यस, तो फिर प्लीज जल्दी भेज दीजिएगा, जल्दी, ठंड तो जानी है। कल भेज आपका देता हूं। च्यवनप्राश का भी बन ही रहा। नहीं, कल भेज देता हूँ पक्का, टुमारो। च्यवनप्राश का भी बन ही रहा। यस सुमुल जी, यस सुमुल लाइन जी, Yes, sir. Just want to check, would the clavicle triangle be able to help double your hump on the neck, the back? Double your hump. yeah. So the hump of the neck, we will treat with the help of cervical triangle. Would that help? Yeah, definitely it is going to help. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Okay, fine. अनुपम जी, आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे, 10 सेकंड। यस, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। सर थोड़ा अर्जेंट था, मेरी डॉटर को आपने आज अर्टिकेरिया का बताया, उसको 10 दिन से हुई है, अच्छा पाकी है, जो भी मतलब बॉडी पे, यहाँ पे नीचे लोअर पे बाजू पे मेडिसिन मैंने लिए अभी, बेटर है, लेकिन अभी उसको बहुत, जहाँ खारिश होती है वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, और अब उसको शोल्डर्स में पेन हो रहा है बहुत। ईयर अप हेलिक्स 7 से लेके हेलिक्स 11 तक ब्लड लेट करिए, और ये आज हमने जो स्किन का पॉइंट बताया है, इस पर एक सीड लगा दीजिए, इतना करिए, तुरंत आराम हो जाएगा। सर ईयर एपेक्स ब्लीडिंग मैंने कर दिया था उसका, लेकिन अब मैंने 3 दिन हो गए हैं करे हुए, अब दोबारा से कर दूं? फिर से कर दीजिए। H7 to H11 से ब्लीडिंग कर देते हैं, कर दीजिए, और साथ में हेलिक्स ये इस पर स्किन वाले पॉइंट पर सीड लगा दीजिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं, अब हम मिलेंगे फ्राइडे। थैंक यू सो मच।